You see, I am giving you this because you will read this, only then you will understand what is going on in this chapter, chapter 11, about the turbine and compressor design. So basic theory is first law of thermodynamics, which was studied in part 1. And another theory is law of conservation of mass, that is mass flow rate is equal to CA. And this is applied to compressors and turbines. And this, how TS diagram, how constant pressure isobaric lines look like. They are converging, they are diverging from left to right. So these things are must be understood. How process of steam expansion is shown from P1 to P2, and this is actual process. This is ideal isentropic process, vertical line, actual process, broken line, and this is compressor process, ideal and isentropic, and real. This is turbine process, ideal and real, and these things you will study. So ratio of temperature ratio, pressure ratio are calculated with the help of this formula. T1 upon T2 is equal to Q1 upon P2 is to gamma minus R upon gamma. You must divide it. Basic gas turbine cycle is this one. This is gas turbine cycle 1, 2, 3, 4. This is purely gas, no vapor here. On PV diagram, phase diagram, you should know the system layout and diagrams also. So efficiency is a function of pressure ratio of gas turbine. Gas turbine cycle work ratio is defined like this. It's a function of pressure ratio. This is gas turbine cycle with actual and real processes, compressor and turbine, and heating and cooling. Now this is compressor efficiency formula, and this is HS diagram, Molly chart, how to find enthalpy, the expansion process. Here from B to C is the process, B to C is the process of expansion, isentropic expansion. Actual Molly chart you must follow. So these are the diagrams and formulas which we should revise. Okay, next I'll show you this diagram actual. I am handing it to you. This is Molly chart here, and I'm sharing with you now. So here is the Molly chart. It is given in textbooks, in Messenger and Bowles and Shapiro and any other textbook like that. So I hope you have those books, even if you don't have. So for your convenience, I am doing your work, and I have copied it and included it. I sent it to you in my reference material. On vertical axis is enthalpy, and on x-axis it is entropy. This is called HS diagram on body chart. So the actual process starts somewhere here in the superheated region, and vertically down isentropic process. Actually, today's topic is efficiency. And efficiency, we need efficiency, because there is no ideal process in real life. So we can calculate, we can design only ideal processes, but we cannot calculate, we cannot design real processes unless we don't know the efficiency. So what we do is we calculate ideal process and then multiply with efficiency or divide by efficiency to find out real situation. So this diagram you use for calculation of steam turbine processes problems, numericals. So this you will need it. So keep it, print, hard copy. So there is a TS diagram also available in textbooks, and here is TS diagram. So of steam, water steam. So sometimes we need TS diagram just to show the processes, and this is here. This is actual TS diagram to the scale, and you can do calculations here for HS and TS diagrams. So next year is my today's lecture. This is actually today's topic, and the topic is performance of actual turbines and compressor. Performance of actual turbines and compressor, that is, we'll talk about efficiency. When we know the efficiency, then we can calculate actual processes. First, we calculate with the help of HS diagram, with the help of calculation, isentropic process, which is ideal process. Then we do real calculations with the help of these concepts. These are listed here. List of concepts listed here, and that is isentropic efficiency of turbine, isentropic efficiency of compressors, overall efficiency of turbine, that is expansion, turbine process to expansion process, B, and then stage efficiency of turbine, expansion,
and reheat factor. So reheat factor RF जो है steam turbines के लिए यूज होता है, और polytropic efficiency of turbine expansion process और polytropic efficiency of compressors compression. So ये reheat factor के अलावा बाकी सारी चीजें गैस टरबाइन के लिए भी यूज होती हैं, स्टीम टरबाइन के लिए reheat सिर्फ स्टीम टरबाइन के लिए यूज किया जाता है क्योंकि गैस टरबाइन में इसकी जरूरत नहीं रहती. So now we will define what is overall efficiency of turbine and compressors. इसके लिए आपको अभी मैंने आपको बताया था कि एक PDF डॉक्यूमेंट बताया था, ये आपको सेंड करूंगा. अब आप उसमें ये चीजें रिवाइज की गई है. चैप्टर 3 में पढ़ाई जाती हैं कि हाउ टू ड्रॉ कंप्रेशन प्रोसेस. दिस इज एक्सपेंशन प्रोसेस ऑन HS डायग्राम, Mollier chart. So this is state 1, this is state 2. Vertical line is end point is 2S, and this broken line is actually condition curve. So nobody can predict it. This is not stable equilibrium condition. This line does not show equilibrium condition. This just shows inlet and outlet point and joined arbitrarily with broken line. So this is real process. So this real process, what is the end state 2? So how to find real end state 2? This will be done with the help of this efficiency. This was expansion in turbine process. Here is compressor process next. On the same HS diagram. So here point 1 is below low pressure up to high pressure isentropically vertical line 2S. End point is 2S, which is isentropic compression. Actual isentropic compression is 2 here at pressure 2. So delta H actual is larger than delta H ideal in compressor. On the other hand, in turbine, this is delta H actual is less than delta H ideal. So turbine efficiency is defined as delta H actual upon delta H ideal, that is isentropic, and compressor efficiency, isentropic efficiency is defined as delta H S, delta H S, any isentropic delta H divided by actual delta H. So this is for compressor. So these are called as isentropic efficiencies because we compare actual process with ideal process, which is isentropic. So overall efficiency, this is called as overall efficiency also. So in case of turbines, H1 minus H2 divided by H1 minus H2S, or this is equal to delta H, and enthalpy rise, enthalpy drop in turbine, actual enthalpy drop divided by isentropic enthalpy drop. Isentropy enthalpy drop is reversible adiabatic, that's why it is maximum possible. So delta H actual is irreversible process but adiabatic, that's why it is less than isentropic. So delta H upon delta HS is always less than 1. So multiplied by 100 will give you turbine overall efficiency. Now for a gas turbine, since H is equal to CPT, so this delta H can be converted into delta T. So for gas turbine, overall efficiency is equal to delta T upon delta TS. We don't need to know the enthalpy of gas, ideal gas or air. So we need only delta T. Now for air compressor also, overall efficiency is delta T H isentropic divided by delta T. If it is steam, delta T delta H isentropic divided by delta H actual. But in case of gas turbine, delta T S divided by delta T actual. Now the overall efficiency so defined depends only on the change of properties. Only temperature, pressures should be known. Gamma should be known. Cp upon Cv upon should be known. Only Cp upon Cv ratio gamma should be known, and temperature and pressure should be known, nothing else. So overall efficiency of gas turbine and compressors and steam turbines depends on properties only. Now reheat factor of actual steam turbine. Steam turbine के लिए reheat factor define होता है. इसकी efficiency is equal to delta H actual divided by delta H delta H I. here अगर notation देख लें वहाँ overall में delta H सिर्फ था actual, but यहाँ delta H I है और overall efficiency में delta H S था only. यहाँ delta H I delta H S I है. I stands for number of stage 1, 2, 3. Stage 1, 2, 3 को हम I कहेंगे. तो delta H I से stage 1 का करना है तो
डेल्टा H1 होगा, स्टेज 2 का कर्नल डेल्टा H2 होगा, स्टेज 3 का कर्नल डेल्टा H3 होगा. So this ratio of every stage is called isentropic efficiency of stage. Now in figure 1135 जो नीचे आ रही है is shown condition curve, that is dotted line of an irreversible process, an ideal curve, isentropic process line, solid line, or a multi-stage turbine. The subscript I represents number of stages from 1 to n, and S is for isentropic. Now, then the stage efficiency is defined as, आपने mute कर दिया mic. Mic is muted. Your mic is muted. So now, figure 1135 multi-stage expansion for a reaction turbine on HS diagram और Molly chart, जिसका original chart आपको मैंने भेज देना है. ये process A से लेकर यहाँ तक ये जो broken line है, this is actually stage wise. This is P1, P2 एक stage हो गया, P2 से P3 दूसरा stage हो गया, P3 से PI यानी ith stage हो गया, और अगर n stage है तो ये last stage Pn हो जाएगी. So इसलिए I is equal to 1 to 3. So पहला stage होगा P1 कहलाएगा, दूसरा P3, Pn कहलाएगा, so like this. लेकिन ये जो लाइन है A, C, M, N, A से लेकर N तक, ये वर्टिकल लाइन है, सॉलिड लाइन है, ये एक्चुअली शो करती है, ये क्या शो करती है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को शो करती है. स्टेज वाइज अगर देखें तो A to B ये स्टेज 1 है, और एक्चुअल ये है A से लेकर यहाँ तक. सो एक्चुअल डेल्टा H I ये है, लेकिन isentropic delta H I ये है. So this delta H divided by this delta H, this is stage 1 isentropic efficiency. So आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये लाइनें आइसोबारिक लाइनें P1, P2, P3, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे देखें, ये इनका दरमियान का जो गैप है वो तंग है. ये रेल की पटरी की तरह बराबर नहीं है, पैरेलल नहीं है. रेल की पटरी थ्रू आउट पैरेलल जाती है, ठीक है ना, उसका दरमियान का फासला कम ज्यादा नहीं होता. लेकिन ये जो पट्टी है P1 की लाइन और P2 की लाइन एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही, जुदा होती जा रही, दूर होती जा रही है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं. तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा H ड्रॉप है, इसको जब जमा करते जाएंगे डेल्टा H P1 से P2 और P2 से P3, और ये जो आगे की तरफ चलते जाएंगे, ये डेल्टा H चेंज होता जाएगा, डेल्टा H बढ़ता जाएगा. तो ये इन सबको अगर आप जमा करें डेल्टा H I एक्चुअल को, तो वो ओवरऑल डेल्टा H O बनेगा. वो क्या बनेगा? डेल्टा H O. इसके जो ओवरऑल एंथैल्पी ड्रॉप डेल्टा H O है, लेकिन स्टेज वाइज डेल्टा H I है. तो स्टेज वाइज जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो उनको स्टेज वाइज डेल्टा H S से डिवाइड करेंगे, और अगर ओवरऑल करेंगे तो डेल्टा H O को डेल्टा H S O ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसको करेंगे. तो ये फिनोमेना पहले समझ लें, ये डायग्राम को अच्छी तरह समझ लें, तो फिर आपको आगे जो एफिशिएंसी वो जो आपको एफिशिएंसी की चीजें समझाने जा रहे हैं वो समझ में आएंगी. और ये क्या हम समझाने जा रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है, वो है रीहीट फैक्टर RF. सो ये जो मैंने बताया था कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस स्टेज होता तो B तक होता, लेकिन एक्चुअली इसका टेम्परेचर देख रहे हैं राइज हो रहा है. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस A से लेकर N तक यहाँ तक टेम्परेचर होता, लेकिन आप देख रहे हैं एक्चुअल प्रोसेस में इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है. तो इसी टेम्परेचर राइज को हम रीहीट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ स्टेज. सो अब आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर N तक हर स्टेज की जो डेल्टा H है उनको जमा करें तो दैट इज ग्रेटर दैट सम, सिग्मा मीन सम ऑफ डेल्टा H S I फ्रॉम 1 to N is greater than AB plus BC plus MN. वो जो लाइनें बनती हैं AB ये वाली A B B C से लेकर N तक, इन सब को जमा करें, और फिर इनको भी यही आइसेंट्रोपिक यहाँ से आगे जाके यही आइसेंट्रोपिक ड्रॉप्स को जमा करें, तो ये वाला आइसेंट्रोपिक ड्रॉप इस वाले आइसेंट्रोप से ज्यादा होगा. इसलिए ज्यादा होगा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, रेल की पट्टी की तरह बराबर नहीं है, राइट साइड पे उनके दरमियान फासला बढ़ रहा है. इसलिए आइसेंट्रोपिक ड्रॉप भी इंडिविजुअल स्टेजेस का आइसेंट्रोपिक ड्रॉप जमा करेंगे तो वो ओवरऑल
लेफ्ट साइड की जो आइसेंट्रोपिक ड्रॉप है स्टेज वाइज वो उसके बराबर स्टेज वाइज जमा करें तो वो उसके बराबर नहीं होगा, यानी कि वो ग्रेटर होगा। आइसेंट्रोपिक ड्रॉप जो है वो 1 से लेकर n तक स्टेज वाइज जो है वो आइसेंट्रोपिक ड्रॉप स्टेज वाइज से ज्यादा होगा, क्योंकि वो उस लाइन को, अगर हम ब्रोकन लाइन को फॉलो करें। नाउ isentropic drop of each state, इससे साबित होगा isentropic drop of each sum of delta H isentropic of each state is greater than overall isentropic drop of actual. Now from 11 equation 1130 जो हमने पहले बताई थी कि isentropic efficiencies is delta H upon delta S I. And if we delta H I क्या होगा, isentropic efficiency जब multiply करेंगे delta H S I को, delta H I is efficiency multiplied by delta H S I. Isentropic delta H drop multiplied by efficiency, तो आप देखेंगे actual enthalpy drop. And if it can be assumed that stage efficiency is the same for each stage. अच्छा, हर स्टेज की एफिशिएंसी कैलकुलेट करें और अज्यूम करेंगे तो सब बराबर हैं, तो फिर क्या होगा, सम ऑफ डेल्टा एच आई स्टेज वाइज, डेल्टा एच आई जब हम जमा करेंगे स्टेज एफिशिएंसी वाली तो ओवरऑल तो उसको लेफ्ट साइड पे जो वर्टिकल लाइन है, सॉलिड लाइन है, उसकी स्टेज एफिशिएंसी निकालने का तरीका ये, उसकी आइसेंट्रोपिक ड्रॉप निकालने का तरीका, उसको भी जमा करेंगे, उसको आप आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना होगा. So this is actual, this is ideal. So efficiency is equal to actual divided by ideal delta H. So actual delta H is equal to efficiency multiplied by delta H isentropic. लेकिन individual stages का sum क्या है, सिग्मा का निशान देख रहे हैं 1 to n, तो उस तरीके से निकाला है. Now therefore delta H overall जो है वो that is equal to isentropic efficiency of stage which is constant is equal to sum of delta H and enthalpy drop in each stage isentropic. So अब आप देख रहे हैं कि इससे हम साबित क्या करना चाहते हैं, इससे हम सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि जब हम डिवाइडिंग बाई डेल्टा एच ओ अगर हम कर दें तो ये डेल्टा एच ओ डिवाइड बाई डेल्टा एच ओ ओवरऑल, डेल्टा एच ओ ओवरऑल actual divided by delta S O ideal, तो उसका ये फार्मूला बनता है, यानी isentropic efficiency multiplied by delta H S sum of delta H S I divided by delta H S O. अच्छा, अब ये जो फैक्टर है, ये राइट साइड वाला sum of delta H S I divided by delta H S O, this ratio is called as reheat factor. So this is definition of reheat factor. So RF is equal to delta HSI sum of sigma delta HSI divided by delta HSO, and this is equal to overall efficiency divided by isentropic efficiency. Overall efficiency divided by isentropic efficiency. यहाँ से आप देखें RF is equal to eta O divided by eta S. So this is the final definition of reheat factor. Now since sigma delta HSI is always greater than delta HSO, it follows that reheat factor is always greater than 1. It is always greater than 1. RF is usually of the order of 1.04, यानी तकरीबन 4% temperature rise हो जाता है actual process में of a steam turbine because of friction losses, because of other losses. Losses के लिए मैं आपको एक assignment के तौर पर एक printed हालत में, ready हालत में एक lecture दूंगा, एक सफ़े का, वो आप पढ़ेंगे टरबाइन में लॉसेस क्यों होते हैं, कौन से होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ लॉसेस जब पता चल जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि एक्चुअल एफिशिएंसी लेस देन एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन लेस देन 1 क्यों होती है और कंप्रेसर की एफिशिएंसी जो है ना लेस देन 1 क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दीज लॉसेस. सो लॉसेस के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एफिशिएंसी तो आपने पढ़ ली, लेकिन क्यों होती है ऐसी एफिशिएंसी लेस देन 100% क्यों होती है, वो बिकॉज ऑफ लॉसेस होती है. और लॉसेस क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या कैटेगरी है, वो आप अलग से उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए. Now reheat factor was first used by steam turbine designers and is not normally used in gas turbine practice.
Polytropic efficiency. Now next topic हमारा होगा polytropic efficiency is used for actual flow gas turbines and air compressor. तो उसके बाद एक example 11.7, इसमें अब आपको reheat factor use करके आपको calculate करना होगा exact conditions और इसको आपकी समझ में आएगा। यहाँ तक आप जो है ना ये देख लीजिएगा वो उसका मास फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टीम टरबाइन का, और CA और CAI वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, CD कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो है अपनी जगह, लेकिन यहाँ असल चीज वो फैक्टर है, उसका इस्तेमाल क्या है रीहीट फैक्टर का, उसका इस्तेमाल करके आप CD कैलकुलेट करेंगे। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। नाउ the next topic is polytropic. This solve problem and you will get you have in the book. So आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ चीजें जो आपको ग्रे कलर की नजर आ रही हैं, बिल्कुल व्हाइट नजर नहीं आ रही ये मेरे प्रेजेंटेशन में, तो ये क्या है? ये एक्चुअली वो मिसिंग पेजेस हैं जो आपके PDF डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेंगे आपको बुक में, तो PDF बुक में नहीं मिलेंगे। तो ये मेरे पास इत्तेफाक से असल किताब तो मेरी व्हाइट पेजेस वाली वहीं कॉलेज में रह गई है यार खान में, इत्तेफाक से मेरे पास एक 15 साल पुरानी कॉपी पड़ी हुई थी इसी बुक की, लेकिन वो काफी पुरानी है, फोटो स्टेट है, उसका पेपर जरा डार्क है, इसलिए उसके फोटो बड़ा डार्क है। मैं कोशिश करता हूँ ब्राइट फोटो है, लेकिन ब्राइट करने से फिर वर्ड जो है ना वो क्लियर नहीं होता, लेटर्स क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं बार इसको आप एक्सेप्ट कर लें। आपको उम्मीद है कि आप पढ़ सकते हो, जब मैं पढ़ सकता हूँ आधा अंधा हूँ, चश्मा लगाता हूँ, आप भी पढ़ लें। Now the polytropic efficiency of turbine and compressor. The polytropic efficiency of an expansion or compression process is the isentropic efficiency of an infinitely small state. देख रहे हैं आप, एक्चुअली polytropic efficiency कोई नई बात नहीं है, ये वही isentropic efficiency जो आप अभी पढ़ चुके हैं। फर्क ये है कि ये overall efficiency नहीं है, ये stage efficiency नहीं है। स्टेज एफिशिएंसी भी फाइनाइट होती है, डेफिनेट उसका एक रेंज होती है, और ओवरऑल एफिशिएंसी की भी डेफिनेट रेंज होती है, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस में आप बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेज। तो हम इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेज की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी कहते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम फिर जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वो आइसेंट्रोपिक नहीं होती, वो यानी स्टेज वाइज आइसेंट्रोपिक है, छोटी अमाउंट, छोटा सा प्रेशर एंथैल्पी ड्रॉप है, छोटा सा प्रेशर ड्रॉप है, बहुत ही कम, डेल्टा DH/DHS। तो ये जो एंथैल्पी ड्रॉप है एक्चुअली ये बहुत ही छोटी सी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है, बहुत ही छोटे से प्रेशर ड्रॉप की। तो इन सब को जब आप छोटे स्टेज पे लें तो एक प्रोसेस फास्ट होता है, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, लॉसेस नहीं हो पाते, और आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए वो जो एफिशिएंसी होती है वो इनफाइनाइटली स्मॉल, वो आइसेंट्रोपिक होती है। लेकिन जब पूरे स्टेज को देखें या इन सबको जमा करें, पूरे ओवरऑल एफिशिएंसी निकालें, तो फिर ये आइसेंट्रोपिक नहीं रहती, ये फिर रिवर्सिबल तो होते, यानी कि एडियाबैटिक तो होती है लेकिन इरिवर्सिबल होती है, इसीलिए इसको हम पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी कहेंगे। नाउ पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन DH/DHS स्मॉल स्टेज, कंप्रेसर की इसका उलट होगा DH/DH एक्चुअल। नाउ इसको जब हम इस तरीके से करते हैं तो फिर हम इसको इंटीग्रेट हम करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी तो ये जवाब आएगा, और ये हम ये जो पॉलीट्रोपिक जो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस उसको आइसेंट्रोपिक होता है, उसमें टेम्परेचर आप इस रेशो से निकालते हैं T1/T2 T1/T2 raised to gamma minus 1/gamma, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि gamma/1 minus gamma में एक eta infinity आता है। eta infinity is the symbol for polytropic efficiency, और eta infinity इन सब में आएगा, और टर्बाइन एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ eta infinity 1139 आप डिराइव करेंगे। अल्टीमेटली आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है वो दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर रेशियो, दैट इज R is the pressure ratio P2/P1 initial pressure divided by final pressure। और इसमें जब आप कंप्रेसर की बात करते हैं तो gamma-1 R के ऊपर gamma-1/gamma divided by eta infinity आएगा।
सो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल है 11.8 है, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल है जो डेरिवेशन है और वो 11.9 है। ये आप देख लीजिएगा, इसको आपको होमवर्क के तौर पर खुद करेंगे और बाकायदा सही तरीके से करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। जो कुछ इसमें लिखा है उसको खाली लिख के नहीं लाना, ठीक है। तो आखिर में एक और डेफिनेशन है, अभी वक्त खत्म होने वाला है, हो सकता है ना मिले। तो ये एक्चुअली ये है एक्चुअल वर्क डन, सॉरी ये डेरिवेशन है और ये वर्क डन इसमें जो है ये जो है वाई जो है ना, वाई यूज होता है वर्क डन फैक्टर, हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कंप्रेसर। तो ईटा the isentropic efficiency, CV blade velocity, work done factor and work component of velocity is at the CW के फंक्शन के तौर पर हम प्रेशर रेशियो पर वाईएथ स्टेज यहाँ ये साबित करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के जरिए कि as y increases the pressure ratio increases, y is number of stages. Now the overall pressure ratio for compressor must be equal to product of the stage pressure ratio, but since these are not equal, then overall pressure ratio is not equal to pressure ratio for a stage raised to power n. तो ऐसा नहीं है कि मल्टी स्टेज में हर स्टेज में बराबर बराबर प्रेशर रेशियो होता है। प्रेशर रेशियो बढ़ता कम होता जाता है जो जो आप स्टेज बढ़ाते जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ एक स्टेज की प्रेशर रेशियो को नंबर ऑफ स्टेज से मल्टीप्लाई करें तो आपको जनाब वो ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी या प्रेशर रेशियो आ जाएगी। तो ये साबित करने के लिए हमने ये डेरिवेशन किया है, यही इसका मकसद था। So that's all. So today's lecture is finished. Time is finished also. Let's go to end today's meeting. Salman Arshad will send see the attendance and send it and warn them not to make any problem. There are 8 participants. Okay, sir. And it should not be more than participants shown here.